Hello my pretties, what's up? Welcome back to my channel. Today I'm gonna show you how to achieve this very dewy, juicy, glass skin like makeup look. I've kept everything very simple, just focused on the skin, and I have added some accessories as well to give it that fairy angelic vibe. Yeah, I hope you're interested in seeing this tutorial, and if you wish to see, then continue watching. We'll start with a very clean face, and then I'm gonna apply generous amount of the moisturizing cream. This one is by Cetaphil. It's a beautiful moisturizer for that intense long lasting hydration. मैं usually भी यही apply करती हूँ, but for this particular look it's perfect. आपको बहुत अच्छे से मसाज करना है इसको. Remember, more than half of the job is done if your skin is well prepped, if you want that dewy look. And don't forget your lips, because it's equally important to prep your lips. Next, I'm applying Rene Cosmetics face gloss, which basically is a illuminator, liquid illuminator. So this gives you that crystal like effect. It's very hydrating, and at the same time it gives you that radiant healthy glow that you need for this particular look. तो आप कोई भी illuminator use कर सकते हो, just make sure it's liquid or cream. Next, I'm concealing the darkness under my eyes and around the mouth area, and for that I'm using Forever 52 का Wheel concealer palette, and I'm using both of these shades because they are 2-3 tones darker than my skin tone, और ये जो भी darkness या acne spots है मेरे face पे उस सबको अच्छे से cover कर देंगे. Then I am highlighting the high points of my face using the lightest shade from the palette. और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं सारी क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ. ऑल्सो वी आर स्किपिंग द फाउंडेशन, क्योंकि अभी हम बेस क्रिएट कर रहे हैं, तो यही दिस विल वर्क एज अ फाउंडेशन टू. तो yeah, I have applied a bit too much of the product, but we'll sort it out. और अभी ब्लेंडिंग होगी अच्छे से, तो वो सब अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन में, एंड ऑल ऑफ दिस विल कम टुगेदर. सो यू नीड नॉट वरी अगर ज़्यादा भी लग जाता है. I am trying to blend out the product, and it looked beautiful once done. Also अभी हमने contouring और blush भी नहीं किया है, so we are yet to do it. अगर हम साथ में करते तो ये इतना weird नहीं लगता, but yeah, now I am contouring my face again using the cream product. और ब्लश करूँगी इसके बाद में, उसके लिए मैं क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करूँगी. एंड इन केस सम ऑफ यू आर कन्फ्यूज, लेट मी टेल यू, वी स्टार्ट विद क्रीम प्रोडक्ट्स, उसके बाद हम लिक्विड्स यूज़ करते हैं, एंड देन वी सेट एवरीथिंग विद पाउडर. तो ये एक ऑर्डर होता है, एंड आई थॉट ऑफ यूजिंग ओनली क्रीम प्रोडक्ट्स टुडे, मतलब क्रीम प्रोडक्ट से स्टार्ट करने के लिए. बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रीम प्रोडक्ट से ये लोग अचीव कर सकते हो आप. यू कैन ऑल्सो यूज़ लिक्विड प्रोडक्ट्स, बट जस्ट मेक श्योर आप मेबलिन, फिट मी या मिलानी ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें, क्योंकि दोज आर डूई एंड हाइड्रेटिंग फाउंडेशंस, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं इस लुक के लिए. And then as you can see, I'm also applying the Kiko Milano cream blush, which again is a cream product, and then I'm gonna set everything in place with powders. Powder blush करूँगी मैं थोड़ा सा, और अपनी अंडर आइज को ट्रांसल्यूसेंट पाउडर से सेट करूँगी, which is very important because otherwise मेरा मेकअप मूव कर जाएगा अगर मैं उसको पाउडर से सेट नहीं करूँगी. And for the same, I'm using Rene Cosmetics translucent powder. I'm gonna set my face. I'll remove the excess and then apply the littlest amount under my eyes, under eye area को set करने के लिए, and then also around the mouth area, क्योंकि those are the areas where you crease a lot, तो उसको अच्छे से set करें. Also guys, sheet masks are an easy and effective way to provide your skin with that immediate and big boost of vitamins and moisture, and these are India's very first bamboo sheet masks. They come in various different variants. I'm using the Ubtan sheet mask, which has goodness of turmeric and saffron along with kiwi and green tea. They have anti-inflammatory and antiseptic properties. This has vitamin C and E as well, which will take care of all the UV damage, dark spots, and it will even out your skin tone. I'm gonna keep it for 15-20 minutes, and then we'll remove and massage the rest of the serum into my skin very well. And the best part is that Mamaearth is an Indian brand which is plastic positive, and these are environment friendly sheet masks. And Mamaearth also believes in this Plants Goods initiative, where they link your order on a website to the tree that they plant. Also, Mamaearth has launched their official app, so you can avail great discounts and offers there, and I'll keep all the buying links in the description, so do check them out. एंड देन जो भी ब्रश में बचा हुआ उसको ऑल ओवर द फेस थोड़ा सा अप्लाई कर लेंगे. एंड देन आई मूव टू पाउडर ब्लश एंड पाउडर ब्रोंजर. ऑल्सो ये इल्यूमिनेटिंग ब्रोंजर और इल्यूमिनेटिंग ब्लश हैं. अगर आपको बहुत सारे स्टेप्स ऐड नहीं करने, आप सिंपली ये यूज़ करके भी एक अच्छा डूई लुक क्रिएट कर सकते हैं. सो आई एम यूजिंग द बॉबी ब्राउन ब्रोंजर, और जो ब्लश था दैट वाज नंबर 14 फ्रॉम मिलानी.
And once the powders are placed well, I'll fix everything in place with this micro finish makeup setting fixer from Pack Cosmetics. It's a beautiful makeup fixer which melts all the powder. Finishing my base with this beautiful highlighter from Forever 52 in the shade bronze. It's a blinding highlighter and my base is done. Now moving to the eyes, I'm using Sedi Cosmetics का eyeshadow palette, which is a beautiful palette. मुझे PR में आया था and I loved it. इसमें मैं एक whitish goldish shade यूज़ कर रही हूँ और लिड पे सिंपली अप्लाई कर रही हूँ. बहुत easy makeup look है ये. You just need to get that beautiful face. No, ब्यूटीफुल बेस डन और कुछ नहीं करना है इसमें और सब कुछ बहुत सेटल रहेगा. सो आई एम सिंपली अप्लाइंग दैट ऑन माई लिड. आप कोई भी पाउडर हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हो. देन आई एम मूविंग टूवर्ड्स दिस पैक पेंसिल, न्यूड पेंसिल, और इससे मैं अपनी वाटर लाइन कर रही हूँ. सो दिस विल हेल्प ओपन अप माई आइज़. अगर आपकी छोटी आइज़ हैं तो आप ये ले सकते हो, इससे आपकी आइज़ थोड़ी सी बड़ी दिखेंगी. एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पेंसिल. देन आई एम कर्लिंग माई आई लैशेज़ बिकॉज दिस स्टेप मेक्स अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस. एंड उसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ. आई एम यूजिंग द एक्स्ट्रा 3D मस्कारा फ्रॉम रिमेल कॉस्मेटिक्स. मोस्ट ऑफ यू माइट नॉट हैव हर्ड अबाउट दिस ब्रांड बट आई ऑप्ट फॉर दिस मस्कारा क्योंकि इसकी वॉन्ड बहुत ही अच्छी है. एंड आई हैव हॉलो आइज़, थोड़ी सी हॉलो हैं तो वो नीचे जब मैं लोअर लैश लाइन पे मस्कारा अप्लाई करती हूँ तो वो मेरा अंडर आई पे लग जाता है एंड स्पॉइल्स माई मेकअप. सो आई गॉट दिस वन. इट्स ब्यूटिफुल. बहुत अच्छी वॉन्ड है एंड बहुत अच्छे से मस्कारा अप्लाई होता है. एंड दिस इज़ द completed eye makeup. Then I'm over drawing my lips using a nude pencil from Forever 52. And then मैंने थोड़ा सा highlighter अप्लाई कर लिया लिप्स पे. Then I switched to this beautiful lip gloss from Rene Cosmetics. और ये बहुत अच्छा lip gloss है. You should definitely check this out. मुझे PR में आया था and मैंने इस लुक के लिए ट्राई किया and I loved it. बिल्कुल स्टिकी नहीं है, ग्रीसी नहीं है and something that I would like from our lip gloss. So that's the completed look and I hope you liked the tutorial. Let me know if it was informative or helpful. Do let me know in the comments below, and if you like this video, make sure you hit the like button and also subscribe to my channel if you haven't already, and share this video as well. And yeah, I'm gonna see you in the next one. Thanks for watching.